phase rule and physical properties of drug. So first upon physical properties. So these physical properties are very important. You have to take into consideration while developing a formulation, new formulation. So it is very important for formulation development. If you need to study all the physical properties of drug. So if you want to successfully design or formulate a particular formulation. So what are these properties? First one is nothing but the additive property. First one is nothing but the additive property, and additive properties or additive property is nothing but it is made up of a simple addition of the atom of individual molecule. जो मॉलिक्यूल है उसमें जो इंडिविजुअल आइटम है उसको एडिशन उसके जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, ओके, सो ऐड करके जो प्रॉपर्टी बनती है उसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज. सो बिकॉज ऑफ सिंपल एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, सपोज दैट यू हैव वन मॉलिक्यूल मीथेन CH4 and it has a two atom, carbon as well as hydrogen. So whatever the properties of individual carbon and whatever the properties of individual hydrogen, suppose that the molecular weight कि कार्बन का molecular weight प्लस हाइड्रोजन का molecular weight is equal to total मीथेन का molecular weight, ठीक है. So that is nothing but the additive property. Additive property is nothing but the because of just simple addition of properties of individual molecules composed of the atom. Now these properties are of different type. Additive property. Next one is a constitutive property. Next one is a constitutive property. Now it depends on the structural arrangement of the atom within a molecule. How these atoms are arranged in a molecule. कि उनका arrangement क्या है, particular arrangement रहता है. So that because of that some properties are there. They are known as a constitutive property. For example, optical rotation and absorbance in the spectroscopy. So whatever optical rotation is there of that organic compound is because of the structural arrangement of atom within the molecule. How these molecules are arranged how these atoms are arranged in the molecule. Because of that, this optical rotation and absorbance in the spectroscopy. So particular compound will have particular absorbance at particular wavelength. Some compound will be have optical activity. See, they will rotate a plane polarized light in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction. So that property of rotation of plane polarized light in the clockwise or anti-clockwise, so that depends on because of the structural arrangement of atom in the molecule, and such properties they are nothing but the constitutive property. So remember, additive properties, these are nothing but just addition of properties of individual atom which makes the molecule, okay. For example, methane. So molecular weight is an additive property. Constitutive property, that depends on the structural arrangement of atom within the molecule. For example, optical rotation and absorbance in the spectroscopy. That is because of the spatial arrangement of atoms in the molecule. So that is a constitutive property. Now next one is again additive and constitutive properties. That means third one is made up of both above two. So if you take additive plus constitutive property, so another property is known as additive constitutive property. So when property depends on the both number of individual atom and the nature of attachment और नेचर ऑफ अरेंजमेंट. जैसे अपन देखा है एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि दो एटम है उसमें मीथेन में, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट अलग है, हाइड्रोजन का अलग है, दोनों मिला के मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट बनता है. सो दैट इज एडिटिव. कंस्टिट्यूटिव में क्या होता है कि हाउ देयर इज अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑन द मीथेन, कैसे अरेंजमेंट है, ठीक है. मीथेन सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिक अरेंजमेंट. अगर इथेन होता है या फिर इथेन होता है तो कैसा, इथेन में कैसा होता है. सो कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. बट this additive constitutive property, they are made of both. When property depends on the both number of individual atom in the molecule plus their arrangement, so that is nothing but the additive constitutive property, okay. So for example, molar reflection of dimethyl ether and ethanol. So dimethyl ether and ethanol, they will have same molecular weight. Dimethyl ether CH3O CH3, ठीक है. इथेनॉल CH3 CH2OH, okay. So ethyl alcohol and dimethyl ether, they are nothing but the having same molecular formula. So they are having same molecular formula, but they will have different arrangement and molar reflection. So it is additive plus constitutive property. So additive and constitutive properties, but different linkage. कि इथेनॉल में डिफरेंट लिंकेज है और इथर में लिंकेज अलग है. CH3O CH3, that is ethyl dimethyl ether. CH3O CH3 dimethyl ether. CH3 CH2OH, that is nothing but the ethanol. They all have similar molecular formula, but they have different linkage
in a ether you will have ether bond, in the ethanol you will have alcohol. Okay, so that is a additive plus constitutive property. Okay, now second, okay, now second is a colligative properties. So these colligative properties are very important, उसके ऊपर क्वेश्चन आता जाता है. So these colligative properties, the property which depends mainly on the number of particles in the solution, कि solution में solute का कितना particle है उसके ऊपर जो properties depend करते हैं उसको बोलते हैं colligative property और colligative property. So colligative properties are nothing but these are the properties of compound. Okay, mainly depends on the number of particle in the solution. Okay, कि solution में कितने particles है, अगर ज़्यादा होंगे तो उसका molarity ज़्यादा होगा. So that colligative property means these property depends mainly on the number of particle in the solution, as it is line to line question आता है. Now what are the different colligative properties? First one is nothing but the depression of freezing point. Okay, depression of freezing point. Second one is the elevation of boiling point. Elevation of boiling point. Third one is the lowering of vapor pressure, and fourth one is the osmotic pressure. Okay, so remember these four colligative properties. इनके एग्जाम्पल याद रखो. एंड colligative property क्या होता है? colligative property मतलब क्या कि the property which depends on the number of particles in the solution. Okay, that is nothing but the colligative property. So these are the colligative properties: depression of freezing point, elevation of boiling point, lowering of vapor pressure, and osmotic pressure. The question comes like this: one of the following is not a considered as a colligative property. और उसमें ये तीन ऑप्शन देंगे कौन से भी करेक्ट, और एक दूसरा कोई दूंगा, वॉल्यूम देंगे, कुछ भी देंगे. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सो दे आर नोन, these three are the fundamental properties. You can see additive properties, constitutive properties, and additive constitutive property. These are known as the fundamental properties, but these are the colligative properties. Colligative property means what? These properties mainly depends on the how many number of particles are present in the solution. Okay, so that is nothing but depression of freezing point, elevation of boiling point, lowering of vapor pressure, osmotic pressure. जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है आपके पास 0.9% सोडियम क्लोराइड. सो इट हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -0.25 डिग्री सेल्सियस, -0.52 डिग्री सेल्सियस, 0.52 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मली सोडियम क्लोराइड जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है. जैसे ही आपने उसमें कुछ सोल्यूट ऐड किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सपोज दैट वो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन में आपने क्या किया कि थायोपेंटल सोडियम का इंजेक्शन डाल दिया, उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे उसको थायोपेंटोन का उस सलाइन सोल्यूशन में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. प्योर वाटर अगर है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया होगा, 100% बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस. अगर उस वाटर में अगर आप सॉलिड पार्टिकल डाल दोगे so that will increase the boiling point of water. So elevation of boiling point, so again because of that added particles or added solute. Okay, elevation of boiling. Lowering of vapor pressure. ठीक है, lowering of vapor pressure. Normally water का vapor pressure जितना है उसमें अगर solute ऐड कर देंगे तो उसका vapor pressure और कम हो जाएगा. So lowering of vapor pressure. Osmotic pressure. तो जो solute है, added solute will also affect the osmotic pressure. So remember colligative properties. This depends on the number of particle present in the solution, and these are nothing but the depression of freezing point, elevation of boiling point, lowering of vapor pressure, and osmotic pressure. These are the colligative property. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, कैसा ना कैसा, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी known as the dielectric constant. First property of your drug molecule, dielectric constant. You should know what is the dielectric constant of your drug if you want to formulate it effectively. Okay, now dielectric constant is denoted by the symbol known as epsilon. It is denoted by epsilon. And what is it? The property of substance to decrease the force of attraction between two parallel conducting plate, such as a plate of electric condenser when dipped into solvent under study. ठीक है, ये क्या है कि dielectric constant क्या होता है. ठीक है, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है, सो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. सो टू डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट एज सच एज इलेक्ट्रिक कंडेंसर व्हेन
dipped into solvent. Dipped नहीं है, dipped into solvent. Okay, under study known as the dielectric constant. Now dielectric constant is given by epsilon is equal to Cm divided by C0. Cm divided by C0. Now what is Cm? What is C0? So Cm is known as a capacitor of medium under study. जो medium है उसका capacitance कितना है? So capacitance of medium under study, capacitance. Then CO is equal to capacitance when the it is filled by vacuum. ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले आपके साथ में सोडियम क्लोराइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेक करना चाहते हो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए सोडियम क्लोराइड मीडियम है और वही बाद में रिप्लेस करना है बाय वैक्यूम, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैक्यूम. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ योर medium divided by dielectric concentration of your capacitance of your medium divided by capacitance of your vacuum will give you the dielectric constant. So again, dielectric constant is nothing but the property of substance to decrease the force of attraction between two parallel conducting plates such as a plate of electric condenser when dipped into solvent under study. Okay. So it is given by epsilon is equal to Cm divided by C0. Cm is nothing but the capacitance of the medium under study and C0 is the capacitance when the medium is not there, medium is absent or medium is vacuum. Now dielectric constant of few solvents. Okay, it is very important. They already asked the question on this. So what is dielectric constant of water? So remember, dielectric constant of water is 80. Dielectric constant of water is 80. Then toluene 2.38. So dielectric constant of water is 80. टोलिन का होता है 2.38, बेंजीन का होता है 2.27. So dielectric constant of few solvents. Water will have 80, toluene will have 2.38, benzene will have 2.27, then acetone will have 2.7. So acetone will have 2.7. So dielectric constant it can be measured by oscillometer, as it is question आ सकता है. One of the following method is used for measurement of dielectric constant. So it is measured by oscillometer. And remember the dielectric constant of water is 80, toluene 2.38. वाटर का पूछा है एक बार, नाइपर में पूछा है. सो नाइपर में वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है ये पूछते हैं. बेंजीन का 2.27, टोलिन का 2.38, एसीटोन का होता है 20.7. एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी मेजर्ड बाय और डिटरमाइंड बाय oscillometer. Molar polarization, second property, molar polarization. We have seen the first property, that was the dielectric constant. Now molar polarization. Second is molar polarization. So it is denoted by alpha, symbol alpha, and it is related with the polarizability of the compound. Now polarizability of molecule is nothing but the polarizability is by which a molecule can be polarized by external force. So polarizability is nothing but the polarizability is the is nothing but the force, external force by which molecule will be polarized. So that is the polarizability. Now it is given by M is equal to alpha into F. F क्या है? Force, external force. M is nothing but the electrical moment of induced dipole. Then alpha, then F is nothing but the field intensity acting on the single molecule. Now next property is nothing but the molar polarization. So I already told you, it denoted by alpha, and it is nothing but the polarizability is nothing but the which is the molecule. Polarizability is by which the molecule can be polarized by external force. इसका इक्वेशन है m is equal to alpha into f. अल्फा क्या है? That is nothing but the polarizability. Molar polarization. m is nothing but the electrical moment induced dipole. F is nothing but the field intensity acting on single molecule. Now next one is a permanent dipole moment. Next property is a permanent dipole moment. Now in the polar compound, you know that we know very well. In case of polar compound, अगर कोई compound polar है, so it has a positive as well as negative charge. But in case of polar compound, positive and negative charges are separated by a small distance or a finite distance, and therefore molecule will have permanent dipole moment. Now this permanent dipole moment is denoted by micro, and it has a unit of dB. It is denoted by micro. It has a unit of dB. Okay, the unit dB was given after this scientist known as a PdB who discovered it. That is a permanent dipole moment. Okay,
So in the case of polar molecule, positive and negative charges are separated by a small distance, and therefore the molecule will have permanent dipole moment, dipole plus minus. जैसे आपका मैग्नेट होता है. Now 1 dB is equal to 10 raised to minus 18 ESU 1 dB is equal to 10 raised to minus 18 ESU. Now it is obtained by multiplication of charge on electron with the average distance between two charged molecule. How it is calculated? Permanent dipole moment कैसे calculate करेंगे? By multiplication of charge on electron divided with the average distance between charge center of the molecule. कि दोनों चार्ज सेंटर में कितना डिस्टेंस है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट कैसे करेंगे, इसके मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड determination of dipole moment. First method, vapor temperature method. In this method is used frequently for determination of your dipole moment. And in this method, dielectric constant of substance and its density of vapor. Okay, dielectric constant of substance and its vapor density, they are determined at a different series of temperature. कि ये टेम्परेचर पे कितना है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री. और the equation is nothing but the micro is equal to 0.0128 square root of v into 10 raised to minus 18. ठीक है, बाकी कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए. Now another method is there known as a less frequently used method. What are the less frequently used method? Refraction method is there and dilute solution method is there. So vapor temperature method, refraction method and dilute solution method, these are the three methods that are used to determine the dipole moment. So out of that, vapor temperature method is frequently used, or it is okay. Then this refraction method and dilute solution method, they are less frequently used. सबसे ज़्यादा इसको यूज करते हैं. Now significance of dipole moment, ये इसका क्या significance क्या है? So it is very important for drug receptor binding. So that can be drug receptor binding can be it can be because of the डायपोल मोमेंट इन द कंपाउंड. अगर आपके ड्रग के कंपाउंड में डायपोल मोमेंट है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली बाइंड करेगा रिसेप्टर को. सो ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग, देन डायपोल मोमेंट आल्सो एक्सप्लेन द इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग दिस द लाइन अरेंजमेंट ऑफ द सब्सटेंस हैविंग मॉलिक्यूल विद परमानेंट डायपोल मोमेंट, आल्सो यूजफुल इन द determining the or determination of biological activity of certain compounds like DDT, like pesticide, it is known as insecticide. That is the significance of your dipole moment. Now next one is nothing but the refractive index and molar refraction. Refractive index and molar refraction. What is the refractive index? Refractive index is nothing but the ratio of sign of incident radiation divided by sign of refractive radiation. So it is a ratio of sin I divided by sin R. ठीक है. So it is the ratio of sin of incident angle to the sin of refracted angle. Okay, when a plane polarized light pass through a compound, that is the refractive index, sin I upon sin R. So velocity, or you can say velocity of light in the vacuum divided by velocity of light in the medium. Okay, so refractive index is nothing but the sin I divided by sin R, or velocity of light in the vacuum and velocity of light in the medium. Now this refractive index depends on the wavelength and temperature. It depends on the wavelength and temperature, and it is measured by refractometer, commonly Abbe's refractometer. So you can, if you want to see the diagram and all, you can see in the book. Okay, that is not important. So remember, just refractive index is measured by Abbe's refractometer, most commonly as a Abbe's refractometer, and it is nothing but the sin I divided by sin R, sin of incident angle, okay, divided by sin of refracted angle. Okay, and it is dependent on wavelength and temperature. Temperature अगर increase होगा तो उसका refractive index भी change होगा, and that's why in chromatography there is one detector known as a refractive index detector. Okay, उसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक. So one of the following detector is the most sensitive to temperature change, and that is nothing but the RI detector, refractive index detector, because refractive index is the property that depends on the temperature as well as wavelength. So change in the temperature or change in the wavelength
will change the refractive index. ओके, सो क्वेश्चन एनालिसिस में आया था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर जो होते हैं HPLC या फिर UPLC में, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर चेंज इन द टेम्परेचर, कॉलम टेम्परेचर. सो वन ऑफ द फॉलोइंग detector is most sensitive to temperature change. That is nothing but the refractive index detector. That is the analysis part. So remember over here, sin I upon sin R, or velocity of light into vacuum divided by velocity of light in the medium. That is the refractive index. Now molar refraction is nothing but the RM. Molar refraction is the RM, and it is a partly additive plus partly constitutive. Refractive index helps in, उसका use क्या है, what is the significance, what is the inference, what is the, so refractive index helps in the identification of compound, then measurement of purity of compound, then determination of concentration of substances dissolved in the medium. So that is the refractive index. It helps in the identification of compound, measurement of purity of compound, and also used to determine the concentration of substance in the dissolved medium. That is the refractive index. तो बाकी इसमें आपको दिखाने का, डायग्राम दिखाने में कोई मतलब नहीं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है. प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे आता है, ठीक है. आपका जो नॉर्मल लाइट बीम होता है, सो व्हाट एवर नॉर्मल लाइट बीम इज द, सो इट हैज़ अ मिक्स्ड direction of your light. Plain polarized light means that light will go into one direction only. Okay, so you can obtain a plain polarized light by passing a light beam through an equal prism. So you will obtain that plain polarized light. Okay. Now optical rotation. Next one is optical rotation. Next property is optical rotation. If the beam of light has oscillation in the single plane, if the beam of light has oscillation in the single plane, known as a plane polarized light. Now it is obtained by passing light through an equal prism. Now if this plane polarized light is passed through a organic compound containing a chiral carbon, if your organic compound has a asymmetric carbon, asymmetric carbon or chiral carbon means what? If carbon is attached to a four different groups, then it is known as a chiral carbon or asymmetric carbon. Now plane polarized light is passed through your organic compound which has a asymmetric carbon. Now this compound has a tendency to rotate the plane polarized light either in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction. If your compound rotate the plane polarized light in a clockwise direction, that means the compound is dextro-rotatory, and it rotate anti-clockwise, then it means the compound is levo-rotatory. And this property of compound to rotate the plane polarized light is nothing but the optical activity, is because of the chiral carbon present in the compound. Now how to measure the optical activity or optical rotation? So optical activity is measured by polarimeter. You might have seen this apparatus आपके कॉलेज में होगा, polarimeter. Okay, so optical activity is measured by polarimeter, and optical rotation is measured by this polarimeter. Okay, and most commonly this Lorentz polarimeter is commonly used. Lorentz polarimeter. So plane polarized light क्या होता है? So if a beam of light has oscillation in a single plane, उसका wavelength जो है वो single plane में different direction में नहीं जाता. So it is known as a plane polarized light. Now you can obtain a plane polarized light. Normal जो light होता है light beam, उसमें वो बहुत सारे direction में जाता है, एक plane में नहीं जाता है. So you can obtain plane polarized light by passing equal prism, by passing through an equal prism. Now if this plane polarized light is passed through your organic compound, solution of organic compound, and if your organic compound is having asymmetric carbon atom or chiral carbon atom है उसमें, और ये लाइट आपने उसकी सॉल्यूशन में पास किया. So now that compound may either rotate this plane polarized light to clockwise. If it rotates clockwise, then compound is a dextro-rotatory. If it rotates anti-clockwise, that means compound is a levo-rotatory. Now this rotation property is because of that chiral carbon or asymmetric carbon, and this property to rotate the plane polarized light, the property is known as the optical property of that compound, and it is because of the asymmetric carbon atom. Now polarimeter is used to measure the optical property of compound, and Lorentz polarimeter is most commonly used. याद रखो. Now specific rotation. So rotation of light at a particular temperature and wavelength. Rotation of light at a particular temperature and wavelength. Normally the wavelength is D line sodium.
15 by d लाइन सोडियम वेपर लैम्प होता है, सोडियम वेपर लैम्प, उससे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ निकलता है. Now it is denoted by alpha. Specific rotation is denoted by alpha. See here the equation. Specific rotation is equal to alpha superscript t subscript lambda is equal to alpha divided by 1 into c. So c is nothing but the concentration, number of grams of optically active substance in the V ml of solvent, means concentration, and alpha is nothing but the your specific rotation. L is nothing but the length of sample solution in decimeter. The path length इसको बोलते हैं, length of sampling cell. Okay? Length of sample in the solution in decimeter. Decimeter मतलब 10 centimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. Alpha is nothing but the angle of rotation. Now next chapter is nothing but the phase rule. Next chapter is nothing but the phase rule. Now this phase rule, this is just the equation. Okay, it was given by this Gibbs. It is also known as the Gibbs phase rule. Okay, so it was given by J. Willard Gibbs in 1887. So he formulated the phase rule. So what is the rule? It is nothing but it is just a simple equation. It is just a simple relation between number of components, number of phases, and number of degree of freedoms. So it is just a simple relation. एक simple equation होता है. It is phase rule is nothing but it indicate the relationship between number of degree of freedom, then number of component and number of phases of the system at a equilibrium. कि एक सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, कितना चेंज कर सकते हो आप वो, उसके बाद में उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ फेजेस कितना है, एट अ इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम. सो गिब्स फेज रूल, दैट इज नोन एज गिब्स फेज रूल. इट इज गिवन बाय जे विलार्ड गिब्स. According to this, F plus P is equal to C plus 2. F plus P is equal to C plus 2. Where F is nothing but the degree of freedom, P is nothing but the phases, and C is nothing but the component. ये component है, ये degree of freedom है, P मतलब क्या number of phases. So it's a relationship for determination of least number of intensive variables. That is independent variables that do not depends on the volume or size of the phase. ठीक है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या, मान लीजिए कि आपके पास वाटर है और उसमें वाटर है. सो वाटर जैसे होता है, वाटर का देयर आर 3 फेजेस फॉर वाटर. सो सॉलिड, लिक्विड, वेपर. सो कंपोनेंट इज नथिंग बट द वन. कंपोनेंट सबका सेम है. वेपर में भी H2O है, सॉलिड में भी क्या मतलब आइस में भी H2O है, लेकिन वाटर में भी H2O है. सो कंपोनेंट इज वन बट फेज आर डिफरेंट. फेजेस आर 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. So the relationship between number of least number of intensive variable, that is degree of freedom, plus number of phases plus number of component is given by one rule known as the Gibbs phase rule. So it is a relationship for determining the least number of intensive variable, that is independent variable that do not depends on the volume or size of the phase. F is nothing but the degree of freedom, then C is nothing but the number of component, and P is nothing but the number of pages. It is nothing but the equation relating to degree of freedom, then number of component and number of pages in the system at equilibrium. That is nothing but the phase rule. Okay. Now degree of freedom means what? Minimum number of intensive variable required for defining a system completely. कितने नंबर के वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 1 है या 2 है या 3 है, कितने वेरिएबल से आप एक पर्टिकुलर सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग द सिस्टम. नॉर्मली टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन. F इज इक्वल टू 0. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो उसको बोलते हैं इनवेरिएंट सिस्टम. इफ F इज इक्वल टू 0 देन इट इज नोन एज इनवेरिएंट. If F is equal to 1, it is known as a univariant. If F is equal to 2, then it is known as a bivariant. Okay. What is meant by components? So components means minimum number of chemically distinct species that are present in the system. For example, ये chemically अलग अलग कितने species है एक system में, उसको क्या बोलेंगे, components. जैसे होता है आपका वाटर इथेनॉल का मिक्सचर है, ठीक है, वाटर इथेनॉल का मिक्सचर है, तो वो सोल्यूबल है कम्प्लीटली, लेकिन उसमें 2 कंपोनेंट है, एक वाटर है, एक मिथेनॉल है. सो एग्जांपल, वाटर इथेनॉल हैज़ अ 2 कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला.
तो वाटर का केमिकल फार्मूला अलग है, इथेनॉल का अलग है। सो वाटर इथेनॉल मिक्स करेंगे तो वो दिखेगा एक सिस्टम आपको, ओके, बट इट हैज़ अ 2 कंपोनेंट हैविंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। नाउ कंसिडर अ सिस्टम ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर। सो इट हैज़ अ 1 कंपोनेंट, वाटर इज 1 कंपोनेंट, वेपर में भी वही वाटर है और लिक्विड में भी वही वाटर है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। सो वाटर प्लस वाटर वेपर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेम केमिकल फार्मूला, okay. So these are nothing but the component. कितने component है? Now phases. So portion of system that are distinctly separated by one from other portion by boundaries, okay. एक portion separate है दूसरे portion से by boundary. ऐसे कितने portions है? That is nothing but the phases. So portion of system that is distinctly separated from other portions by boundaries. For example, ice and water. So इसमें 2 फेजेस है, एक सॉलिड एंड लिक्विड। आइस एंड वाटर इसमें 2 फेज है, सॉलिड प्लस लिक्विड, दैट इज नथिंग बट द फेज। नेक्स्ट वन इज अ कंडेंस्ड सिस्टम व्हेन प्रेशर इज टेकन एज अ 1 atmospheric pressure to reduce the complexity in the phase diagram, okay, we neglect the vapor phase, okay, we only consider liquid and solid phase. So system is called as condensed system, and for such condensed system the phase rule is known as the reduced phase rule. So it is nothing but the F is equal to C minus P plus 2, C minus P plus 1, okay. So F1 is nothing but the, इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। सिस्टम, नंबर ऑफ फेजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कमेंट। सो कंसिडर वन सिस्टम, गैस लिक्विड और लिक्विड गैस और सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस सॉलिड, ऐसे 2 फेज है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू फेज रूल नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं उसमें, गैस लिक्विड, एक तो गैस होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर और सॉलिड होगा, मतलब सिंगल गैस या फिर लिक्विड और सॉलिड। सो नंबर ऑफ फेजेस उसमें कितना रहेगा, एक ही रहेगा, एक तो गैस रहेगा, नहीं तो लिक्विड रहेगा, नहीं तो सॉलिड। नंबर ऑफ फेजेस कितना रहेगा, 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें कितना रहेगा, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। C क्या है कंपोनेंट, P क्या है फेज एंड प्लस 2, C minus P plus 2, okay. So suppose that you have only gas or only liquid or only solid, so number of phases will be 1 and degree of freedom will be F is equal to C कितना है, कंपोनेंट कितना है, गैस का कंपोनेंट एक ही होगा ना, सो कंपोनेंट 1, फेज कितना है, सो फेज 2 एंड नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2। सो 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। सो सिंगल गैस लिक्विड या सॉलिड है तो उसमें नंबर ऑफ फेजेस 1 है, नंबर ऑफ कंपोनेंट भी क्या है, 1 ही है। सो 1 माइनस 1 प्लस 2 2। सो सिस्टम इज कॉल्ड एज अ बाई वेरिएंट। सपोज दैट गैस लिक्विड सिस्टम है या फिर लिक्विड सॉलिड है या फिर गैस सॉलिड है। अभी यहाँ पे 2 फेजेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेजेस आर 2। सो जस्ट कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। सो 2, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट कितना है, एक ही है। जैसे मान लीजिए वाटर प्लस वाटर वेपर, गैस लिक्विड, वाटर प्लस वाटर वेपर, गैस लिक्विड। वाटर का क्या है कि कंपोनेंट एक ही है लेकिन फेज 2 है, ओके। सो कंपोनेंट इज 1, फेज इज 2, C माइनस P प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। सो सिस्टम इज अ यूनिवेरिएंट। एंड सपोज दैट गैस लिक्विड सॉलिड, वाटर का ले लो, गैस लिक्विड सॉलिड। सो कंपोनेंट क्या है इसमें, 1 ही है। तो वाटर फार्मूला, वाटर वेपर का भी फार्मूला H2O है, वाटर का लिक्विड का भी फार्मूला H2O है। अगर वाटर सॉलिड आइस भी लिया तो उसका भी फार्मूला H2O है। सो दो देर आर 3 फेजेस, गैस लिक्विड सॉलिड, बट कंपोनेंट इज ओनली 1। सो 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सिस्टम इज अ इनवेरिएंट। अगर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है तो सिस्टम इज इनवेरिएंट। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 आता है तो यूनिवेरिएंट। अगर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है तो बाईवेरिएंट। सो दैट्स हाउ नाउ सिस्टम कंटेनिंग सिंगल कंपोनेंट, सिस्टम कंटेनिंग सिंगल component. Let's see the water. So it is a phase diagram for water. So water का temperature and pressure. If you plot a temperature on x-axis and pressure on y-axis, so water will have different phases: solid, liquid plus gases. So this one is known as solid. ये solid phase है, ये liquid phase है और ये gaseous phase है।
सॉलिड को अगर टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे आप सॉलिड का, सो इट विल गेट मेल्टेड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, सॉलिड को टेम्परेचर देके अगर आप if you increase the temperature of solid, so water will ice will be converted into liquid, okay, water. So that is not anything but the melting, and reverse is called as the freezing. अगर लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड में जाएगा, दैट इज द फ्रीजिंग। सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में जाएगा। सो इफ यू हीट द आइस, दैट विल गो इनटू वाटर, दैट विल कन्वर्ट टू वाटर, नोन एज मेल्टिंग। एंड इफ यू कंडेंस द वाटर, दैट विल गो इनटू formation of ice, that is nothing but the freezing, okay. Now liquid state is there, so conversion of liquid to gaseous state is known as vaporization, and conversion of your vapors to liquids known as a condensation. कंडेंसेशन मतलब वेपर्स का लिक्विड में जाना, लिक्विड का वेपर्स में आना मतलब वेपराइजेशन। सो जस्ट कंसिडर दिस पॉइंट इज नोन एज अ स्पेलिंग। अभी ये तो सॉलिड फेज है, यहाँ पे सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, एंड ये आपका गैसेस फेज है। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस, direct conversion of solid into gases known as sublimation, and conversion of gas vapor into solid known as a deposition. For example, if we take a iodine or sulfur solid है, iodine solid है, उसको अगर हीट करेंगे तो उसका लिक्विड नहीं बनेगा, उसका डायरेक्टली क्या बनेगा, वेपर्स, ओके, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। एंड कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू डायरेक्टली सॉलिड नोन एज a deposition, okay. Now consider this point, this is the point known as a triple point of water. This is point known as a triple point of water. This point is known as a triple point of water. Now the temperature is nothing but 0.0098 degrees Celsius and pressure is 4.5 torr. At this point, ये जो point है triple point of water, this is known as a triple point of water. And triple point of water at 0.0098 degrees Celsius and 4.5 torr pressure. Atmospheric pressure कितना है, 4.5 torr. And temperature कितना है, 0.0098 degrees Celsius. At this temperature and pressure, now all three phases, solid, liquid and gases, मतलब ice, water and water vapors, they are in an equilibrium. At the point at which the three phases exist in a system at an equilibrium, known as a triple point of water. So triple point of water means it is a temperature and pressure at which three phases, that is solid, liquid and vapor, they coexist in a equilibrium in a system, that is known as a triple point of water. और triple point of water का टेम्परेचर प्रेशर कितना कंडीशन है याद रखो, टेम्परेचर इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 4.5 टॉर, ओके, टॉर में भी है और एमएम पे जी में भी होता है। यू कैन सी ओवर हियर अगेन दिस ग्राफ, सेकंड ग्राफ, ओके। तो प्रेशर ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज सॉलिड, दिस पेज इज नॉन एज सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड है, आइस है, यहाँ पे लिक्विड बन जाएगा, जैसे हीट करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, तो और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वेपर बन जाएगा। एट द पॉइंट एट विच, यहाँ पे देखो टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ट्रिपल पॉइंट 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 mm of Hg, mercury vapor. So the point at which these solid, liquid and vapor, these three phases of water exist in a or coexist in a equilibrium in the system known as a triple point of water. So ये triple point याद रखो वाटर का, okay. Now take a triple point of water. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर का फेज रूल अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। फेज रूल क्या है, C माइनस पी प्लस 2, ठीक है, C माइनस पी प्लस 2। ट्रिपल पॉइंट पे देखो यहाँ पे कितने पेजेस है, यहाँ पे तीनों पेजेस, मतलब दे आर इन इक्विलिब्रियम। सो पेजेस कितना है 3, कंपोनेंट कितना है 1, सो 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा, सो 0। सो दैट मीन्स सिस्टम इज इनवेरिएंट। सो सिस्टम इज इनवेरिएंट एट द ट्रिपल पॉइंट। And if you take this point, for example solid, okay, at this point number of phases are 2, component is 1, so you will get a degree of freedom 1. So that means system is a univariate over here. So same is true with any point on this line. So यहाँ पे system univariate है, मतलब depends on one component, कौन था, either temperature और pressure। और यहाँ पे भी univariate, but at the triple point system is a unvariant, ठीक है, that will not depend।
Triple point of water is nothing but the temperature and pressure at which solid, liquid and gases phase of water can exist in a stable equilibrium. That is nothing but the triple point of water. कितना है टेम्परेचर क्या है 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड वेपर प्रेशर कितना है उसका 4.58 mmHg. याद रखो ये. नाउ दिस इज अ सिंगल कंपोनेंट सिस्टम. सिंगल कंपोनेंट अभी टू कंपोनेंट सिस्टम कि मान लीजिए आपके पास एक दो लिक्विड है जैसे फिनॉल एंड वाटर. ओके सो यू हैव टू component system. So two component system for phenol water. Okay, we'll see the diagram first and then we'll see this diagram. So it is a phenol water system, two component system, pressure on temperature and pressure. Okay, so see phenol and water, they are miscible in a certain proportion and at a certain temperature. They are not miscible at a temperature below critical solution temperature. So यहाँ पे देखो concentration of phenol on x-axis and temperature on y-axis. This is known as a critical solution temperature. 66.8 known as a critical solution temperature or upper consolidate temperature. Okay, UPT, upper UCT, upper consolidate temperature or critical solution temperature. The temperature above which there is a single phase exist and below two phases like that. Okay, so that is nothing but the upper consolidate temperature. Now, two component system phenol water, the critical solution temperature or upper consolidate temperature is the maximum temperature at which two phase exist. Okay, that is nothing but the upper consolidate temperature. T is equal to 66.8. तो फिनल वाटर सिस्टम में अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर होता है. ट्रिपल पॉइंट में क्या यहाँ पे वाटर में क्या होता है सिंगल कंपाउंड सिस्टम में कि यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट होता है. ठीक है भाई, अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर होता है. नाउ अगेन टू कंपोनेंट सिस्टम निकोटीन वाटर सिस्टम. अगर निकोटीन वाटर सिस्टम में लेंगे, निकोटीन प्लस वाटर लेंगे तो उसमें फेज डायग्राम में अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर एज वेल एज लोअर कंसोलिडेट टेम्परेचर दोनों भी मिलता है. सो निकोटीन केस ऑफ निकोटीन वाटर सिस्टम यू हैव बोथ अपर एज वेल एज लोअर. Case of nicotine water system, you have both upper as well as lower consolidate temperature. So upper consolidate temperature for nicotine water is a lower consolidate temperature for nicotine water is a 60.8 degrees Celsius and upper consolidate temperature is a 208 degrees Celsius. मतलब क्या? So above 208 degrees Celsius, nicotine and water are miscible in all proportion, and below 60.8 degrees Celsius, nicotine water will be homogeneous. बट बिटवीन 60 मान लीजिए 61 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 61.5 हो गए, वहाँ पे निकोटीन वाटर मिसिबल नहीं है, टू फेज सिस्टम. ओके, एंड बिलो 60.8 वन फेज सिस्टम, अबाउ 2 अगेन वन फेज सिस्टम. सो दिस इज अ सिस्टम नोन एज अ निकोटीन वाटर सिस्टम. सो टेम्परेचर यू कैन सी हियर concentration of nicotine in water at 60.8 degrees Celsius. Below the 60.8 degrees Celsius there is a one phase, that means miscible. Okay, above 60.8 degrees Celsius two phases system exist, यहाँ पे miscible नहीं है. ठीक है, and up to the 208 इसके ऊपर फिर से क्या है miscible है. Okay, so 208 is known as the upper consolidate temperature and 60.8 is known as a lower consolidate temperature. So निकोटीन वाटर सिस्टम में अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर लोअर कंसोलिडेट टेम्परेचर बहुत होता है, याद रखो. फिनल वाटर सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर होता है. ठीक है, फिनल वाटर सिस्टम में. एंड देयर इज वन मोर सिस्टम नोन एज अ ट्राइएथाइलामाइन वाटर सिस्टम. ट्राइएथाइलामाइन वाटर सिस्टम टू कंपोनेंट सिस्टम है, फिनल वाटर सिस्टम, निकोटीन वाटर सिस्टम एंड ट्राइएथाइलामाइन वाटर सिस्टम. दीज थ्री आर टू कंपोनेंट सिस्टम. नाउ फिनल वाटर सिस्टम में अपर कंसोलिडेट टेम्परेचर, ठीक है, इसमें निकोटीन वाटर में दोनों होता है, और ट्राइएथाइलामाइन वाटर सिस्टम में होता है लोअर कंसोलिडेट टेम्परेचर. लोअर कंसोलिडेट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स बिलो द 40 डिग्री सेल्सियस ट्राइएथाइलामाइन एंड वाटर दे आर मिसिबल, एंड अबव 40 डिग्री सेल्सियस दे आर टू फेज. You have to read this, you have to understand this phase system, because you can decide while mixing, while formulating the formulation. So right amount of drug and the right temperature or right storage condition
so that there is a one phase system exists। इससे होता है आपका, जैसे फिनॉल वाटर, सो पर्टिकुलर फिनॉल वाटर का सॉल्यूशन बना दिया आपने, सो ऐसा नहीं कि वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा उसका। सो पर्टिकुलर टेम्परेचर, इफ यू कीप फिनॉल वाटर सिस्टम below 20 degrees Celsius, then there is a solidification, there is a phase separation. So that's why you need to understand this phase diagram. So remember, in case of two component system, phenol water system will have upper consolidated temperature, triethylamine water system will have lower consolidated temperature, and nicotine water system have both lower as well as upper consolidated temperature. Now two component system containing solid and liquid. So whatever two component system we have seen, this was a two liquid, जैसे फिनॉल वाटर है, ट्राइथैलामाइन लिक्विड है, जैसे निकोटीन लिक्विड है। So निकोटीन वाटर सिस्टम, ट्राइथैलामाइन वाटर सिस्टम and phenol water system. So two component system having two liquids. Now two component system having solid and liquid. Now this is also known as a eutectic mixture, and this system will have two phases, solid and liquid. Example of those system which exhibit this eutectic mixture, for example Salol and Thymol, Salol and Camphor. Okay, so now this Salol, Thymol और Salol और Camphor, they are miscible as a liquid. अगर liquid दोनों का liquid लेंगे मिक्स करेंगे तो miscible है, लेकिन you cannot mix when they are in a solid state. So immiscible as a solid. So these are the miscible as a liquid but immiscible as a solid. Okay, to define this system, the phase rule is reduced. So F1 is equal to C minus P plus 1. Now you can see over here, this is a phase diagram for eutectic mixture. तो इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। सो मान लीजिए कि ये कंपोनेंट ए, मान लीजिए कि सेलोल है और ये थाइमोल है कंपोनेंट बी। ओके, बी इन परसेंटेज ए, वेट बाय वेट। नाउ एट दिस पॉइंट ए इज 100% and B is added to A. So when you go on the right side, the concentration of B will increase, concentration of A will decrease. Okay. For example, at this point we have 50-50 concentration. Okay, but solid are not miscible, they are not miscible. Okay, at this point there is a solid A, at this point solid A is there, and solution of A plus B, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वैसे वो मेल्ट होके, तो मैक्सिमम यहाँ पे सॉलिड का ए का कंटेंट रहेगा और थोड़ा सा लिक्विड ए प्लस लिक्विड भी रहेगा। दिस इज नोन एज अ यूटेटिक पॉइंट डिनोटेड बाय ई, इट इज नोन एज यूटेटिक पॉइंट। सो एट दिस पॉइंट, सो व्हेन these two solids are mixed, they will change the phase, they will get converted into liquid. Okay. Solution A and B. So if you apply this phase rule at any point, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर आपने वो अप्लाई किया तो यूटेटिक मतलब क्या, यहाँ पे लिक्विड बन चुके हैं। तो कंपोनेंट इज 2, फेज इज 1 + 1। ओके, 2 - 1 + 1, so 0. So system is invariant at eutectic point. So consider a point on this line. यहाँ पे कहाँ पे भी एक पॉइंट कंसिडर। सो इन दिस कंपोनेंट कितना है, अगेन 2 कंपोनेंट है। ओके, एंड फेजेस कितना है यहाँ पे 2 फेजेस। सो सॉलिड ए प्लस सॉलिड बी एंड सॉल्यूशन ए प्लस बी, मतलब फेजेस 3 है और कंपोनेंट 2 है। सो 2 - 3 + 1, 2 - 3 + 1 ऐसा रहेगा, तो यूनिवेरिएंट वहाँ पे। सो दिस इज नोन एज अ फेज डायग्राम शोइंग यूटेटिक पॉइंट। सो इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मीन बाय यूटेटिक पॉइंट, ये याद रखो, टेम्परेचर एंड प्रोपोर्शन एट विच 2 solids will get melted, then known as a eutectic point. So eutectic point of Salol and Thymol is an example of solid dispersion. That is nothing but the intimate crystalline compound of one component dispersed in another component. So this is a 2 component system of solid